It's been a while since I did my spaces when people who are writers, they develop, burnout. They can't write. So I think it's called writer's block. One of the big challenges any trader faces is handling drawdowns. Trust me, no matter for how many years you are trading, drawdowns are never going to be easy. It's always very difficult because the money that we get in our trading account, the profits that we get in our trading account, we think that that money belongs to us. That is our money. It's like a bank account. And when drawdown happens, that money goes away. It makes us sad. That's the unique thing about loss. Okay, it's very similar to any other kind of loss in life that you face, depending on the magnitude. And you would feel sad. You will feel gloomy, and you can't shake it off very easily. So I'll tell you how I handle it. In March, I had from 10th of March, my drawdown started, and I was in good drawdown, more than 10 or 12% drawdown, and but the magnitude was not so important, but it happened in 10 trading session. So it was like I was losing money every single day, and that to around 1%, you can say. Nothing seems to be working. So, and this kind of a situation I face almost every year. That drawdown has to come sometime or the other. And especially when you're doing very well, when you are on a winning streak, you become overconfident. Start trying new things. Half of them will not work, and the drawdown starts. How I handle my drawdowns, I can tell you, is which is that and I know it sounds very cliche, very typecast, but how I handle it is by following a set process. If you are a profitable trader, then by now you would know that in trading you have to follow a certain process. Those, even if you're a discretionary trader, the process, like how much money will be at stake. Each bet that you will be taking, how much money you're willing to lose. Normally, for most people, it is around 1% or 2% or half a percent, depending on your trading style, what is your win ratio, and so on. Then, according to it, so let's say you have a capital of what 10 lakh rupees, so that 1% is 1,000 rupees. So you're willing to lose 1,000 rupees on a trade. So that, in a way, will define your position size as well. That will define how much quantity you will buy or sell, whatever you are trading. So all of us follow certain process, and that is like stepping stone before you become profitable consistently. And then I'm talking about the drawdown. How I handle drawdown is by having a set process outside of the trading, outside of my trading. So as you know, if you are following me for a long time, that I used to drink, or I used to try various substances. But when I'm facing a drawdown, I never deviate from my ideal routine. It's so simple, and it sounds so boring, but following a proper sleep cycle, sleeping dot at the same time, getting up at the same time. Thankfully, I have a job, so it helps me formulate a routine. So I get up at whatever 6:30, and then I leave for my office at 8:30. So having that routine during a drawdown is very important. And it's when we are facing a drawdown or when we are having a loss, we don't feel like following a routine. We feel like, आज सो लेते हैं, आज नहीं करते हैं, आज. So if whatever you are doing, you want to break away from the routine, because following any kind of routine requires so much of energy, the brain energy and the physical energy, and drawdown sucks away all kinds of energy from you. So I make it a point that I don't use any kind of use or abuse any kind of substance like alcohol, or anything which I know will be detrimental to my recovery process mentally. So no alcohol, no weekend parties, nothing. And second is following the routine of sleep. Getting up on time, sleeping, trying to sleep on time.
trying to have uninterrupted sleep. So just to give you a small example, that in my bedroom where I sleep, I had blackout curtains, but there is one window where constant light used to come. So the day my drawdown started, I put black chart paper on that window, made it a blackout curtain, because when you're sleeping, having like pitch dark room is very important. I mean, in my opinion, whatever, if you're comfortable in the light, it's okay. What I'm saying, that focus too much on the uh, following the process part of it. Then second is, I normally also I love to go for long walks, but when my drawdown starts, okay, I make it a point that I go for long walks. Long meaning 20%, sorry, 20 minutes plus. So I break my day into three long walks, three times a day. From office itself, I try to complete 1 hour of walk. And when my winning streak is there, or when I'm doing far okay, these things are not important. I mean, I sometimes I miss, sometimes I skip, but when I'm in drawdown, I make sure that I'm following this. Similarly, eating a very very clean diet, and that somehow, if you try it for 4 5 days, you will understand that it gives you a lot of mental energy, a lot of mental clarity and alertness, so that you don't commit any big blunder. What I mean by a big blunder is that, let's say you're facing a drawdown. So we all have this revenge trade ka kida in mind. We want to trade big. We want to get that money back as soon as possible. This this is like a devil inside your head. Okay, if you don't keep your sanity in check, if you don't keep your cool and calmness in check, so if your composure in check, then you are feeding to this devil, and you will be doing impulsive trade, and your drawdown will become even bigger. And once it becomes more than your what you had planned initially, let's say you had planned 15% initially, and it becomes bigger than that, then you will be on a very shaky ground. This money that you have lost, let's say you had planned 15%, and now your drawdown is 22% or 25% because of the impulsive trades you have done. That is a very narrow territory from where our gambling instincts take over us. We start lying to our family members, we start lying to our friends, we start taking random, without any basis kind of trades with huge position size. And that is how all these capital blow up stories are formed. People lose a lot of capital. Seasoned traders, I have seen that they lose a lot of capital, as if हम हिंदी में बोलते हैं कि उनके ऊपर कोई मतलब कोई किसी की कोई devil has captured their mind. This happens. So that's why it is very important that initial, I hope that you have planned it in such a way that any kind of steep drawdown you recover from within 1 month or 2 months. So though that initial period, it's very difficult to have that clarity of mind, having a lot of mental energy to fight that drawdown, and so that you don't do anything impulsive. Third thing which I do, it's not outside the trading, but within the trading, is the moment I cross 10% of drawdown, I reduce my position size by half. So let's say if your bad luck continues, so you will be losing now at a slower rate. Obviously you will make a comeback also at a slower rate, but I believe market kahin bhaga nahi ja raha. Markets are not going to be there for another 50 years. So if you are able to handle your psychology, your mental well-being well for next 1 to 2 months, then definitely you'll make a new all-time high, or you'll recover from the drawdown. So I reduce my position size by half. It's a very drastic measure. Some people reduce by 20%, some people reduce by 30%. But what I have seen repeatedly is that halting the drawdown is far more important than cashing out on the opportunities, easy opportunities. So this is how I handle my. Goes without saying, I follow a very strict clean diet during the drawdown, so that also helps a lot. And I try to avoid any kind of negativity, and I'm being very frank and honest with you. Because of this drawdown only, you would have seen that for last 1 month I'm not on active on Twitter. Because if I open Twitter, Twitter is like it's kind of a
it's kind of a weird temple for all the negative people in the world. So all the negative things, like even an earthquake or somebody cheating someone, or these things happen very rarely in life. But if you open Twitter, you will realize that everybody is cheating everybody else. Everywhere there is an earthquake, everywhere there is a flood. So all the negative news is amplified, and it adds to the stress which you are already feeling. Okay. So I try to stay away from social media as it is, but if it is a drawdown which I'm finding it difficult to handle, then I try to stay away from all kind of negative people, including, I'll not speak to people who are perpetually negative, or I'll not uh, get into any kind of talk. As I always say, and I have tweeted about it as well, that a trader has to be eternal optimist. If you're not optimist that your next trade, your next week, your next month is going to be awesome, is going to be good, then trading itself is, half the trades are going to be a negative any which ways. So you'll not be able to handle that day to day stress. So and during drawdown it becomes even more important. So it's very important that you reduce out or cut out all kind of negative loops from your Twitter feed, or from your life, or from your other social media. That is how I removed Rodon. And just to give you an update, I'll put my PNL in a couple of days, not getting time. So I cut down my size last week, and immediately I started making bumper profits. But now that I am operating on half the size, so those profits also look very small. So it happens, the moment you decide something to reduce the drawdown, obviously, so this pain of regret will also be added, and so on. So that's how trading becomes a difficult job. So enough about my rant. I have given it for like 15 minutes. Anybody who wants to speak to me, I have to go at 8:30. Please feel free to take a mic, and you can discuss your question, your problem, your suggestions. Uh, just to carry the discussion forward. Uh, okay, Sardarji Money. Okay, Uh, so you are also anonymous, or you want to disclose your real name? तो रियल नेम इनिशियल्स वहां पे है, बाकी तो anonymous ठीक है. Okay, okay, okay. You have a very cute DP as well. तो ये पूछना था भाई कि what happened, why did you reduce the size, and Acha, I guess you joined a little late. I made an all-time high on 10th of March, and after that I started losing money, and almost in 10 12 sessions I lost 10-12% capital every day. Almost 1% I lost. I was betting big on this bank collapse, so I was short that day. Little heavier position, because I thought it's not a regular opportunity. It's a big opportunity to make money. Market reversed from there, so I had pain. Then I went long, and then that also didn't work out, because market was in a very very narrow range for at least last second last week of March, if I remember correctly. So series of bad trades, series of so every day was lose. So 10-12% I lost from the peak, maybe 13%. And so that's how the drawdown started in March. Last drawdown I had seen was in May last year. So I was having a very big winning streak. जब लगने लगता है ना कि इधर का भगवान अपन ही है, then market teaches you who is the real god. Coincidentally, मेरा भी was the highest month था. Month में I made 16% on my trades. फिर वो टप 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 करके 10% पे क्लोज हुआ. अभी -8% ड्रॉडाउन चल रहा है. Probably we're both doing the same mistakes. Yeah, yeah. So what you are trading? Bank Nifty? Bank Nifty, mostly Bank Nifty. Intraday. So you're seller or buyer mostly? मेरा कोई ईमान धर्म नहीं है. Okay. How do you trade? Like some technical levels? Your straddles? A straddle है, but what I do is एक साइड का stop loss hit होने के बाद I take the reverse trade, मतलब buy side ले लेता हूँ, तो पोजीशन डबल on the other side हो जाती kind of. So अगर मैंने straddle बेचा हुआ है और एक साइड का मैंने stop loss जहाँ पे जब hit होगा, तो मैं उसी stop loss को buy कर लूंगा. हाँ. तो it becomes a double directional trade.
डबल डायरेक्शनल ट्रेड, हाँ। ओ माय गॉड, तो उसमें तो बहुत ही स्टमक चर्निंग ड्रॉडाउन्स भी आते होंगे और रिटर्न्स भी आते होंगे, एवरीथिंग गेट्स एम्पलीफाइड। हाँ, मोर और लेस वही है कि हाँ कि मतलब आप बनाओगे तो भी 10% बनाओगे महीने का, और गवाओगे तो भी 10-12% गवाओगे, राइट? बिकॉज मार्केट मेनी टाइम्स रिवर्सेस फ्रॉम देयर। हाँ, तो मतलब फिर हमें फिर उतना ही चाहिए ना। अब जैसे आपकी पोजीशन डबल हो गई तो आपको यही चाहिए कि स्टॉप लॉस छोटे रखने होते हैं। मतलब मेरे 10% के स्टॉप लॉसेस है, ऑप्शन प्राइस का 10%, 3 का ऑप्शन है, 3.5 का ऑप्शन है, 35 पॉइंट स्टॉप लॉस है। तो मुझे ये करना है कि भाई अगर 35 पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, अगर वो 15 पॉइंट भी और आगे चला गया तो मेरा स्टॉप लॉस मेकअप हो गया। दैट काइंड ऑफ। अच्छा, तो उसके बाद क्या 15 पॉइंट आगे टीपी होता है क्या? हाँ, फिर उसके बाद थोड़ा ट्रेल होता है। हाँ, नहीं टारगेट नहीं होता, ट्रेलिंग होता है। इस वाली स्ट्रेटजी भी अच्छा बट अच्छा, ये भी क्या आपने मॉक स्टॉक मॉक से टेस्ट करी या खुद से निकाला है? ये एल्गो टेस्ट पे, हाँ एल्गो टेस्ट वही था, उसी पे बनाई। वेरी गुड यार, वेरी गुड। इस तरह के कुछ वियर्ड टाइप के टेक्निक है, बोला कोई रिलीजन नहीं है, मुझे प्राइस से कोई मतलब ही नहीं है, चाहे 350 का स्टॉक ऑप्शन है, वो तो 150 तो इस तरह के आप कितने स्ट्रैडल सेल करते हो? ये मतलब वो है बास्केट है, तो मंडे थर्सडे छोड़ के बाकी सब दिन चलता है। तो थर्सडे का तो और भी वियर्ड है, थर्सडे को मैं निफ्टी आईटीएम 1 करता हूँ, ऑलमोस्ट सिमिलर थिंग। ओके ओके, वेरी गुड। मतलब आप यू आर प्लेइंग फॉर बिगर ट्रेंड्स, हाँ, इट्स माय आई एम अ ट्रेंड गाय बिगर ओनली। इंट्राडे ट्रेंड्स। ओके ओके, नाइस। तो ये तो 50% कर लेता हूँ, 20-30% से फिर देन आई विल सेल थोड़े बहुत फार आउट स्ट्रैडल की। जिस दिन ट्रेंड नहीं चला तो उस दिन थोड़ा डैम्प हो जाता है लॉस हम्म, टाइप का आइडिया। ओके। तो ये लास्ट बट फाइनेंशियल ईयर में कितना बन गया, कितने परसेंट बन गया? लास्ट फाइनेंशियल में तो बहुत घपले किए थे। हम्म, बट आई थिंक नहीं, लास्ट फाइनेंशियल ईयर आई थिंक आई डिड सम मनी आई मेड आई थिंक। बट आई एम स्टिल एडिंग अप नो, मतलब एक एक लॉट से स्टार्ट किया था जुलाई से ऑटोमेटिक ट्रेडिंग। हम्म। आई एम डूइंग 3% अ मंथ एवरेज आई थिंक अप्रोक्सीमेटली। हाँ, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है एक नए ट्रेडर के लिए। आई डोंट नो वेदर यू आर न्यू ट्रेडर और नॉट, कि आप मतलब जैसे जैसे सक्सेस मिलती जाती है तो हम स्केल अप करते जाते हैं, और उसके बाद ऑब्वियसली लॉस का मंथ तो आएगा ही। और जैसे आपने शुरू किया 5 लाख के कैपिटल से, नाउ यू आर कॉन्फिडेंट, आपने उसको अच्छा खासा बढ़ा लिया, नाउ यू मेक इट 15 lakhs। सो अभी जो ड्रॉडाउन आएगा इट विल बाइट यू 3 times। यस, तो ये चीज बहुत स्केल अप की प्रॉब्लम आती है। तो उसमें जैसे मदन ने भी एक ब्लॉग में कवर किया हुआ है ये, कि स्केल अप मतलब एकदम ऐसा ग्रेजुअल एक एक लॉट करके करना चाहिए, कि इट्स लाइक यू नो a very very gradual boring process rather than scaling and jumping all of a sudden. So हाँ, वो शुरू में बोरिंग दिखता है। आई रेड दैट ब्लॉग। वो शुरू में बोरिंग दिखता है, बट वो 6 महीने बाद इफ यू गेट देयर देन लगता है कि यार बड़ा मजा आ रहा है। मतलब हाँ, you're right, you're right. बट वो शायद बाद में जाके और बोरिंग हो जाए जब एक लॉट विल नॉट मेक अ सेंस, राइट? तो Yeah. लाइक जुलाई में आई डिड 1x, Mm-hmm. तो देन आई मेड 2x नेक्स्ट मंथ। फिर उस मंथ में लॉस हो गया था, आई डिड नॉट इंक्रीज। फिर उसके बाद 3x किया। ऐसे करते करते every month if it is profit I will add, if it is not profit I will not add. That kind of rule I am following. I think we talked about something similar, right? Mm-hmm. Mm-hmm. So just okay, thank you. So अभी देखते हैं क्या होता है इस महीने। ये मंथ तो अरे अभी अच्छा ही होगा ट्रेंड। ये अप्रैल एंड मई आर गोइंग टू बी ट्रेंड फॉलोइंग का। अच्छा, तो लेट्स सी। ठीक है, ओके, let's see. विल गो टू नागा। Yeah, hi, sir. When you say when you go underwater, right? When it becomes equity curve high, at that point in time you double your lot size. I mean the original lot size, or how it is. I mean because when you नहीं, अभी मैं इसको जैसे मैंने आई डोंट नो, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन अगेन? see when you go drawdown, right, underwater. So as you reduce your position size when it goes below say 10% के नीचे गया तो, then again it's coming above the water takes time, right? No matter how So- much time it will take, I will Mhm. increase the lot size once I hit the new equity high. Yeah, So that's right. and Yeah. in the way I traded, it should take 1 or 2 months. But market है, कुछ भी दिखा सकता है. So it might take 5 months, 6 months. So I'll not increase my size till then, because saving the capital becomes a priority. Because once you have saved the capital to a level that your mental sanity comes back, you will not take impulsive trade, or you will not, you know,
जो behaviorally you will be much more well behaved the way you had planned to behave. So it's very important. I mean, capital का क्या है? You know, even if you compound it at 10% per annum, it is far more than gold, FD, equity, and everything, right? So there the focus is not there, and the focus is that the mental makeup has to come back like a trader who takes lot of risk but calculated risk kind of a thing. Yeah. Yeah. Thanks. I got that. Okay. Okay. Any other question, Yuvraj? हाय आनंद आनंद मेरा मार्च में एक थर्ड वीक में 5% ड्रॉडाउन आ गया था 15 lakhs. उसके पहले मेरा अब तक का हाईएस्ट लॉस था 4 lakhs. और आपने बताया था भी कि अमाउंट मत इंक्रीज करना, तो मैंने तो लास्ट 1 month में कुछ किया नहीं था इंक्रीज, बट फिर भी ये बड़ा ड्रॉडाउन आ गया था क्योंकि फिन निफ्टी ट्राई किया था, वो भी सेम क्वांटिटी से जो निफ्टी के क्वांटिटी से करता था उससे, तो उसमें ही 11 लाख का लॉस हुआ. उस वीक में निफ्टी में भी 4 लाख का लॉस हुआ, टोटल 15 lakhs, ऑलमोस्ट 5%. बट नेक्स्ट 2 वीक में रिकवर हो गया सब. तो आपने जो बोला था कि ये नहीं करना है, लॉट्स अमाउंट नहीं बढ़ाना है, वो तो मैंने फॉलो किया. अभी ये 1.5-2 महीने में मैंने कुछ इंक्रीज नहीं किया है कैपिटल. बट ये रिटर्न से जो आपने बोला था ये सस्टेनेबल नहीं रहेगा, तो मेरा 1.92 करोड़ का 2.75 करोड़ हो गया है, तो 88 lakhs का प्रॉफिट है. सो इज दिस सस्टेनेबल? मतलब, और इसमें क्योंकि मुझे एक बड़ा शॉक लगा है अभी, ये 15 lakhs वाज लाइक आई वाज इन बिग पैनिक एट दैट टाइम. ये फिर से होगा तो, और क्योंकि अभी लॉट साइज बढ़ गई है तो लॉस का लेवल भी बढ़ गया है ऐसा. नहीं तो वही मैं बोल रहा हूँ, मैं आई थिंक आई डिस्कस विथ यू लास्ट टाइम एज वेल कि इसको ग्रेजुअली बढ़ाइए. ट्रेडिंग करना है और उसको अगर एज अ मीनिंगफुल एंडेवर करना है कि उससे इतना प्रॉफिट आए विच विल चेंज योर लाइफ फाइनेंशियली, तो लॉट साइज तो बढ़ाने ही पड़ेंगे, राइट? बट अगर आप एकदम से 1.5 गुना 2 गुना करोगे तो आपको साइकोलॉजिकली हैंडल करना सबके बस की बात नहीं होती है. और मार्केट में मैंने देखा है कि जैसे ही आपको लॉस, बट इट इज टेकिंग अवे योर 2 months ऑफ हार्ड वर्क. आपने 3 तो सो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू यू नो इंक्रीज इट ग्रेजुअली. अगर आपको लगता है कि यू नो यू आर मेकिंग प्रॉफिट्स वेरी फास्ट एज इट हैपेंड इन योर केस, कभी 5% कभी 10% प्रॉफिट आ रहा है, तो डोंट मेक इट टाइम बेस्ड. मेक इट कि अगर मैं अपने कैपिटल में 2% ऐड किया मैंने, ठीक है, तो मैं इतने लॉट बढ़ा दूंगा. अगर मैंने अपने कैपिटल में 5% ऐड किया तो मैं इतने लॉट बढ़ा दूंगा. बट मेक इट ग्रेजुअल एंड बोरिंग, सो दैट इज द ओनली वे. और जैसे आपने बोला ना कि फिर निफ्टी में नए चीज ट्राई कर रहे थे, तो वो ऑब्वियसली मार्केट इतना तेजी से चेंज हो रहा है, नए नए रेगुलेशन आ रहे हैं, नए नए एवरीथिंग इज चेंजिंग सो फास्ट. अर्लियर इट वाज नॉट द केस. सो नई नई चीजें ट्राई करनी पड़ेंगी. बट जो आप नया ट्राई कर रहे हो उसको फुल कैपिटल से मत ट्राई करो, और कम कैपिटल. हाँ, जल्दी में नहीं अपने को जाना है. अगर कोई भी नई चीज ट्राई कर रहे हैं ना, तो उसको कम से कम 100 days, 3 months, 4 months उसको छोटे कैपिटल पे ट्राई करो. छोटे कैपिटल पे, राइट. बट आपने जो एडवाइस दिया था कि इंक्रीज नहीं करने का, वो इट हेल्प मी सो मच, क्योंकि अगर उस टाइम पे मेरा कैपिटल बड़ा होता तो और लॉस का साइज भी बहुत बड़ा हो जाता. इट वाज सेम कैपिटल, सो आई कुड एटलीस्ट मेंटली मैनेज इट, तो दैट हेल्प्ड अ लॉट. हाँ, इसका फर्क पड़ता है इन द सेंस कि मैं तो ये भी बोलूंगा, आई एम नॉट अ डॉक्टर और अ ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट, बट कि हमारा एक जो लॉस होता है ना, इट अफेक्ट्स अस इन द ब्रेन इन द सिमिलर वे अ फिजिकल पेन विल अफेक्ट अस. तो उसका या अगर आप मतलब अगर आपको कोई गर्म चीज छुआएगा तो उसका पेन, मतलब ब्रेन का जो पेन थ्रेशोल्ड होता है ना, वो भी ऐसा होता है कि अगर सेम लॉस को आप बार बार देखोगे ना, तो यू गेट यूज्ड टू इट. अगर आपने पहली बार ट्रेड करा होगा, आई डोंट नो आपका पहला लॉट क्या था, अगर 5,000 का लॉस हुआ होगा, उस दिन भी रात में नींद नहीं आई होगी. अभी आप 5,000 का ब्रोकरेज दे रहे होगे, और आप अगर कोई भी जो भी अमाउंट है, 50,000, 60,000 या 1 लाख का लॉस अगर आपको रेगुलरली देख रहे हो, हफ्ते में 2 बार 3 बार देख रहे हो, तो अब उसको आपको अफेक्ट नहीं करता होगा, बिकॉज ब्रेन हैज बिकम अट्यून्ड एट अ वेरी वेरी बेसिक लेवल. तो इसलिए बहुत जरूरी है कि एक पर्टिकुलर कैपिटल के, स्पेशली द लॉस साइज, स्पेशली द ड्रॉडाउन साइज, हम एकदम अट्यून्ड हो जाएं. मतलब अगर मतलब समझो कि मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है ट्रेडिंग में ग्रो करते हुए कि जिनको 1 लाख का लॉस से बहुत
डिस्टेबलाइज हो जाते थे, फिर धीरे धीरे कैपिटल Okay. बिल्ड किया करने लगे। अभी उनको डेली कभी 10 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, कभी 10 लाख का लॉस हो रहा है, कभी एंड उनको आप Right. बात करोगे आधा घंटा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आज उनको प्रॉफिट हुआ होगा कि लॉस हुआ होगा, बिकॉज दे आर सो डिटैच फ्रॉम इट। और वो प्रैक्टिस से ही आता है। Yeah. प्रैक्टिस ऑफ ट्रेडिंग तो है ही, बट प्रैक्टिस ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। तो अगर आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई है, समझ लो 5 लाख के प्रॉफिट या लॉस की, तो अगर आप सडनली Right. अपना कैपिटल बहुत बड़ा कर दो, यू हैव बिकम वेरी गुड ट्रेडर, अभी आपको डेली का 50 लाख का प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, तो इट विल डिस्टेबलाइज यू। Right. वही हुआ मेरे साथ। But it was a timely advice for me and it helped. So अभी से बंद कर, मतलब कुछ बढ़ाया नहीं अभी से, वैसे ही कैपिटल पे, तो अभी बहुत स्मूथ लग रहा है। और मैं ये भी मानता हूँ कि वी ऑल थिंक इन अ वेरी वेरी पिक्यूलर मैनर, तो ट्राई टू स्टडी योर ब्रेन। फॉर एग्जांपल मेरा ब्रेन कैसा है कि अगर मैं फर्स्ट क्वार्टर में मैं ड्रॉडाउन में चला जाऊं, अप्रैल मई जून में, तो कैसा होता है कि मैं पूरा साल उसको रिकवर करने का प्लान करता रहता हूँ, मैं एक्स्ट्रा डिफेंसिव हो जाता हूँ। ओके, राइट। और अगर मेरा फर्स्ट क्वार्टर अच्छा चला जाए तो उस क्वार्टर के जो प्रॉफिट कुशन है उससे मैं एग्रेसिव हो जाता हूँ, एंड आई समटाइम्स गिव अ मच बेटर रिजल्ट। तो इसलिए अब तो यू हैव टू स्टडी कि हाउ यू बिहेव इन अ सर्टेन। आपको लगता है कि ये अप्रैल में आपका फर्स्ट क्वार्टर चालू हुआ है या नया साल चालू हुआ, उस हिसाब से या एवरी मंथ इज द सेम मंथ फॉर यू। ये थोड़ा खुद को रीड करना, मार्केट को रीड करने में तो मैं देखता हूँ रोज स्पेसेस होते हैं, पीपल रीड सो मच ऑफ मार्केट, उसकी बगिया उतेर देते हैं, उसमें इतने चार्ट्स। तो अपने माइंड को रीड कर लिया तो आई थिंक 90% ऑफ द बैटल इज वन हियर। मतलब मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरा 6 बार लॉस हुआ था, बट एवरी टाइम व्हेनेवर आई मेड लॉस ना, नेक्स्ट वीक में वो लॉस रिकवर हो गया। अब इस बार लॉस का अमाउंट बहुत बड़ा था, 15 लाख था, तो 2 वीक लगा रिकवर होने में, बट इमीडिएटली रिकवर हो जाता है। तो मेरा ऑब्जर्वेशन ये कि अगर मेरा लॉस हो रहा है तो मैं बहुत डिफेंसिव ट्रेड करता हूँ, और वो डिफेंसिव ट्रेड करना ही मेरे लिए प्रॉफिटेबल है। तो मैं एवरी वीक मुझे ऐसा सोचना है कि मेरा लॉस ही हुआ है और उस हिसाब से ही ट्रेड करना है, तो देन इट बिकम्स प्रॉफिटेबल ट्रेड फॉर मी, ऐसा है। या हाँ, सो दैट्स गुड आइडिया। और ये अब आपने अच्छी चीज बताई, नए नए चीज को हमको तो ट्राई करते रहना है, क्योंकि सेम इंस्ट्रूमेंट्स और सेम चीजें, जैसा मुझे लगता है धीरे धीरे बहुत ओवर क्राउडिंग होने वाला है या हो भी गया होगा, वी डोंट नो। तो इसलिए इट्स वेरी गुड थिंग दैट यू आर ट्राइंग फिन निफ्टी। इनफैक्ट आई एम डूइंग फिन निफ्टी सिंस अगस्त, और इसका बिहेवियर अभी लास्ट 3 मंथ जनवरी फरवरी मार्च तो काफी कुछ बैंक निफ्टी के जैसा ही है। स्लिपेज भी मुझे ज्यादा नहीं मिला, और इसमें क्या बोलते हैं, रैंडम मूव्स भी मैंने ज्यादा नहीं देखी। 2 वीक से तो मूवमेंट भी नहीं आया, कुछ भी मूवमेंट नहीं आया 2 वीक। लास्ट 2 वीक तो बहुत पीसफुल था, बैंक निफ्टी से भी ज्यादा पीसफुल था, और बहुत ज्यादा पीसफुल है वो। मेरा लॉस करके उसके बाद शांत हो गया। हाँ, उसके पहले बहुत वोलेटाइल था। यू आर राइट। हाँ, the March 3rd week was dangerous. ठीक है, आई हैव टू हैंग अप नाउ। मैं ये टाइम पे खाली रहता हूँ, तो 7:40 to 8:30 आई विल ट्राई टू डू स्पेसेस मोर ऑफन, ऑलमोस्ट एवरी डे, एंड लेट्स सी। अगर आप पहली बार सुन रहे हैं मुझे तो ज्वाइन करिए। 7:40 7:45 we'll start doing the spaces and we'll do till 8:30. So let's see if I'm consistent on that. On that note, I want to thank you. Yeah, I want to thank every one of you. Bye bye. Thank you so much. Thank you.